This is a classroom code, right? Yeah, I will put the link also. Right. So Sir, it is showing that there is no class with this code. no, I will share the link. Right. Wait a minute. Actually, I am trying to open my this file on workshop. Okay. So this manual I will share to you, right? Right. I sent that manual first, right, to you. Now I will link. Workshop. Okay. Good. I shared there also. I will share to CR also. Right.
Right. Try to join by this, right? Classroom code. Think something it's not showing. CQXI. Right, I will take this equals. Joint. Right. Are you able to join? Yes, sir. Sir, join the classroom. Yes, yes. Yes, sir. The classroom, right? Nobody it is there. I think. Yeah, you know how to join it, right? Yes, sir. You have to. Okay. Sir, it's showing you have some kind of assignment, 100 points. You have given us some assignment for 100 points. No, it's written there. I think workshop. Workshop. It is there. Foundry Lab. Foundry lab. Mukesh Yes, sir yes. posted a new Foundry lab. Foundry Lab for 100 points. Foundry lab. Yes. But there's no assignment in it. No questions are No, no, there. no assignment. It is there. I will put this manual there, Hmm. and I think I have given some timing there, right? Mm. So due is 30 December, right? Also, you'll put the questions in some time. No, what you have to do, the manual I have given to you, right? The That same this you 22 have to pages write on manual. the, This yes, 22 pages manual that you have just provided us on WhatsApp. yes, yes, that Hmm. manual as it is, you have to write on the experiment file, Excuse me, Also, sir. lab file. Sir, Anirudh Sharma is Yes, requesting to join the class, sir. okay, okay. Okay. so, sir, we are supposed to make a practical file then. Yes, One set plain and one set and ruled. you have to submit before that due date, One set plain and right? 1 week ruled. is, I think 1 week is sufficient, but 30 pages are there, right? Each for the each lab, right? Near about 30 pages are there. So all pages you have to write, right? And same thing it is there in the theory class also, right? Somewhat difference is there, but near about 90% will be of the same lab content. Sir, do we have to make Right. diagrams also? There are diagrams also in the Foundry Lab manual. Diagram also, in left side you will there is a blank pages are there, right, in experiment file, right? So there you can draw that figures. Sir, and we have to write the whole manual in 1 week. Yes. Okay, sir. Sir, there are only two exercises. Two exercises, but theory part is lengthier one, right? Okay, sir. So we'll see Sir, do we have to write any procedures and experiments here, and I will show one video also, right, in today's class, right? So if time left, you can use that for the writing for the manuals. Sir, do we have to write any vision, mission, etc. also? No, no, no. You just write that as per manual, right? Okay, sir. So some others are joining. So again, it is difficult to find out your roll numbers, right? So whenever you put the your these things right up here, right?
So you have to write your roll number, right, in comment section also and in report also, right? Otherwise it is very difficult, right, to find out the roll numbers and their names. Otherwise you can change your name and put their roll numbers, right, and their name. I think it is difficult for you to change it, right? Yes, sir. It's So very difficult to change our names. okay. So I have provided you PPT, that last class PPT. I think I have provided. No, sir. Okay. So that is for only Viva, right? You have to write only from the manual. So I will open that manual itself, right? Sir, can you I provide think the PPT? PPT also I will provide, no problem. But PPT and these things all are same, right? Somewhat maybe different, but as a whole, it is same, right? As a concept wise, it is same. Right? So I will provide run now itself, right? Otherwise, I will again forget. Otherwise, I will share in BME class, right? CR. Right. I send to CR, right? Or I will send in your BME, something is there now, another. Otherwise, in official, it will be again a problem for it. BME 04. Right. Otherwise, what I will do, I will put in the classroom itself. Right. You can assist from there. Right. I have sent that PPT to CR. Right. He will circulate in your group. I will open. So I will share the PPT first. Right. Why you are writing the roll numbers? Hello? Am I audible? Yes, sir. Why students are writing roll numbers? I don't know, sir. Okay, let them. Sir, in some other classes, the teachers take attendance in this form, so that is why maybe they are writing. Okay. Is there any backlog students is there in a 17 group? It is present here, right? No, sir, no new student. K12.
A12 है इसमें इसमें ना जो सर दो बैक बैक स्टूडेंट्स हैं सर, दो स्टूडेंट्स सेकंड हैं ईयर, सर। हाँ 2 स्टूडेंट्स है सर एक अनुज यादव, एक वो निखिल कुमार सर। हाँ वो है, मगर वो भी अगर नाम से ज्वाइन हो जाते हैं ना, मुझे फिर प्रॉब्लम है कि क्या वो पुराने हैं नए हैं, राइट। ओके, उसमें कुछ लिस्ट आई हुई है ना, उसमें कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं। चलो, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, आ रहा है। यस सर। तो हमने तो ये देख लिया था, राइट। हमें अभी प्रोसीजर देखना है, right? और रिमूवल ऑफ फिनिशिंग वी हैव सीन, राइट। तो बाय प्रोसीजर समझो, आपको ए पे ड्राइंग मिली हुई है, राइट, दैट इज योर ड्राइंग पार्ट, राइट। एल्बो है, राइट, एल्बो में और अंदर होल भी है, जो दिखता नहीं है, राइट। अगेन इन द नेक्स्ट सेम वन सब्जेक्ट इज देयर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, राइट। तो उसमें क्या है कि आपको ड्राइंग कैसे बनाना है ये आपको पता चलेगा, राइट। सो डॉटेड लाइन जो है वो आपको दिखती नहीं है, उसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं, राइट। सो फर्स्ट ए ड्राइंग इज ऑफ योर ए मैकेनिकल ड्राइंग ऑफ द पार्ट, तो इसमें क्या है, आपका अंदर का होल है, राइट, एल्बो में, राइट। तो उसमें आपको कोर चाहिए, राइट, यू नीड अ कोर। तो कोर के लिए आपको कोर का पैटर्न मोल्ड चाहिए, और मोल्ड में आप पैटर्न बनाओगे, राइट। सो को पैटर्न प्लेट इज देयर, ड्राई पैटर्न इज देयर, आउटर पोर्शन उसका, राइट। तो उसके बाद में है आपका कोर बॉक्सेस, मीन्स इनसाइड जो है, राइट, इनसाइड एरिया जो है उसको हॉलो करने के लिए उसको आपको कोर चाहिए, तो कोर आप कोर बॉक्सेस में बनाओगे, right? So they are again converted into two halves, right? So you have to fill the core sand in that one and make the core, right? After making core, you have to take cove or drag boxes, right? And you can take, right? So you have to use the risers, runners, and the plus maybe upper or lower, right? Depend on the design criteria, right? तो उसमें कोप रेडी फॉर सैंड, राइट। तो पहले सैंड फिलअप करना है, राइट। ये हम बाद में फिर देखेंगे, राइट। एक वीडियो देखने के बाद आपको फिर ये फिर मैं दिखाऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। सो यू जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट। अगेन वी विल सी दिस डायग्राम अगेन, राइट। सो कोप रेडी फॉर सैंड, राइट। तो सैंड स्प्रिंकल करेंगे इसमें, राइट। रनर है, राइजर है, राइट, फ्लास्क इज देयर, राइट। जहां पे आप स्क्रू से आपका मटेरियल जाता है, राइजर से ऊपर आता है, राइट। तो अगेन यू हैव टू कोप आफ्टर रैमिंग विथ सैंड एंड रिमूविंग द पैटर्न स्क्रू एंड राइजर, तो ये रिमूव करना है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है, ड्रैग रेडी फॉर सैंड, ड्रैग में पैटर्न रख दिया, हाफ पैटर्न, फिर उसमें सैंड फिलअप किया और हैमरिंग मतलब रैमिंग किया, राइट। ड्रैग आफ्टर रिमूविंग पैटर्न, तो दोनों बॉक्सेस को जोड़ दिया, राइट। दोनों बॉक्सेस को जोड़ दिया कोर के साथ, राइट। तो वो कैविटीज तैयार होगी, उसके बाद आपने फिलअप किया। फिलअप कहाँ से करोगे, स्क्रू पिन से, राइट, और राइजर से ऊपर आएगा, राइट। देन यू हैव टू कट द मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल, स्क्रू, राइजर, रनर, राइट, कट करना है। कट करने के बाद आपको फाइनल कास्ट प्रोडक्ट मिलेगा। उसमें कास्ट प्रोडक्ट के बाद आपको फिर फिनिशिंग करनी है, मशीनिंग वगैरह करना है। मशीनिंग के बाद आपको फाइनल मशीन प्रोडक्ट मिलेगा एज पर योर ड्राइंग, राइट। ये आपको थोड़ा थ्योरेटिकली पता लग गया। अभी इसके एक एक स्टेप्स हैं, बट फर्स्ट वी विल सी द वीडियो, राइट। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, राइट। सो इट मे क्लियर फ्रॉम योर
video. Right? So I will open that video. How to take a link? It is on your screen. Hello. No, sir. No, sir. No, sir. 1 minute. Hold, right? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा. No, sir. No, sir. अब आ गया कुछ स्क्रीन पे. हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So see, this is the cupola furnace. Sir, audio नहीं है कुछ. Yes. Audio है sir, audio. ऑडियो आवाज तो है इसमें. है ऑडियो. सर अब वीडियो का नहीं लिंक रही. भेज दो, हम है देख मेरे लेंगे पास. वैसे. आ नहीं रही सर, आ नहीं रही राइट. audio. लिंक शेयर कर दूंगा मैं. राइट. आई विल शेयर द लिंक. Okay, sir. So you have to remove the stand, right? After casting.
सर ये तो इंडियन लेबर है ना? Yes. See, this is this is a very old process, right? So manpower requirement is high, but the price for the means labor is very low, right? You can say technologically it is far behind as far as other manufacturing processes are concerned. But the advantages are you can have a different any shape you can find out from the any material, right? So it is a Indian industry, right? Indian industry it is there, right? But I will show you the this also automatic also. They are all doing it manually, right? Manually, but if you do manually, then only you will get the knowledge, right? Few Okay, sir. machines are Yes, sir. performing all these things now. So Yes, sir. what is doing machining, you will not get that idea. As far as I am concerned, my knowledge is concerned, right? So Yes, sir. by seeing this, don't means discourage yourself that you are in mechanical or electrical that we have to do this type of work and all these things. It's not like that, right? So automation it is there, right? So all filling and the mixing will be performed by machines right nowadays, right? So there will be conveyors for the sands, right? Mixing of the sands, right? All will be performed by automations, automatic machines, conveyors, and all these things, right? But just take the knowledge from this video, right? Yes, sir. Yeah, they are converting the motors, rotary motions, right? So from now it is important as far as your mold making process is concerned, right? See carefully. So in this vent hole is also shown, right? You know the path, right? How to fill it, and from the riser you can see it is filled or not, right?
This is a venting operation, right? This is a venting operation to escape the gases. Right? सर वीडियो अटक गई। Cancel class. Seriously? नहीं नहीं, यही रहो भाई, कोई जाना मत, मेरा नाम लगा दोगे बाद में। सर लीव हो गए। बैटरी तो सही थी सर की, पता नहीं कैसे चले गए। नोटिफिकेशन देखिए ऊपर। इतने सालों की जमा कर रखी है। भाई इतनी सुबह सिर्फ ये सुनने के लिए उठना पड़ता है, बताओ। लिंक भेज देते, हम वीडियो खुद ही देख लेते। हेलो हेलो। हेलो सर। यस सर, यस यस सर। तो डिस्कनेक्ट हो गया था, राइट? अगेन आई एम शेयरिंग दिस। तो यहाँ तक आपका मोल्ड मेकिंग का पैटर्न का नीचे ट्रैक वाला पोर्शन बन गया, राइट? तो दिस इज अ सिंगल पीस पैटर्न, राइट? तो डबल पीस में क्या करना है आपको? जस्ट दूसरे बॉक्स में सेम चीज बना के फिल अप करना है, मतलब ज्वाइन करना है, राइट? स्लीपर बार है, राइट? So what is this white powder? So white is your parting sand, right? White Okay, sand sir. is your parting sand, so that it should not stick to the other sand or particle, means the different part, right?
see, white sand is parting sand, and they are putting some black also, right? That is a graphite one, right? So that it is a just like as a refractory sand, right? And they are done venting. So he is doing ramming, that is ramming allowance, right? Or shaking allowance you have to add on the pattern, right?
So he is putting right core inside the cavity, right, to have a hole, right, in that part. Why he put that three parts, right, to maintain the gap, right, between the cavity and the core box. स्क्रीन पे आ रहा है ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir.
So this is over, right? I think you got some idea. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें राइट अभी मैं आपका ओपन करता हूँ जो ये है फाउंड्री शॉप मैनुअल। तो ये उसमें एक्चुअल the parts na what you are seeing in the cars and all these things. So nowadays if it depends on volume, right? Automation is depend on volume, how much you are doing, what is the volume of the that product, right? And depends on that one, right? Industry seeking the automation, right? तो आप अगर आप बोलते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, so most of them they are doing manually, right? And if they are having middle scales, somewhat automation, semi automatic, right? If you see a large volume, right? Big industries, right? Just like a Kirloskar industry है जो फेरस की कास्टिंग करती है, right? सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर हेड, तो उसमें आपको ऑटोमेशन मिलेगा, right? So you can find out the so many companies are there, right, in India, right? So they are doing sand casting, and most of these industries will see far from the your city, right? So they are having some dust issues and means environmental issues are there, right? As far as sand casting is concerned, right? For the die casting, it is not a problem. Investment castings, right? So there are different types of castings, but as far as your lab is concerned, you should know the sand casting. So I will share that. So introduction, blue diagram of typical sand casting process. Already know sand, molding sand, pattern, core print and core box. Right? Core print is nothing but the तो जो 3 पार्टिकल रखे थे ना, राइट, गैप मेंटेन करने के लिए, राइट, उसका दूसरा भी ऑब्जेक्टिव है कि डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हो, राइट, यूनिफॉर्म डायरेक्शन, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में सॉलिडिफिकेशन हो, वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, राइट. मोल्डिंग टूल्स ऑलरेडी यू नो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर द सैंड कास्टिंग प्रिपरेशन, स्पेशल कास्टिंग टेक्निक्स, right? These are other special casting techniques are there, right? Exercise 1 and exercise 2, 3. So in fettling, what is happening, right? Fettling जो आपने एक मशीन में पुटअप किया था, right? Parts, right? बाद में वो सैंड पार्टिकल्स पूरा निकल के फिर आपका क्लीन अप पार्ट मिल गया, right? तो उसमें क्या होता है बेसिकली स्मॉल बॉल्स, राइट, स्टील बॉल्स होते हैं, उस वो पार्ट के ऊपर इम्पिंज किया जाता है, हैमरिंग किया जाता है उससे, राइट. तो उसके वजह से आपका जो भी सैंड लगी हुई है पार्ट के ऊपर, तो वो निकल जाती है. Right. Properties of molding sand. I think that we have not seen. That porosity. Porosity means if it's porosity, high porous materials means it is having less density, right? Some air bubbles will be there, right? In porosity. So it is having lesser, higher the porosity, lesser will be the strength of the material, right? So porosity is, as far as molding sand is concerned, right, porosity is required to escape the gases, right? Again we are doing venting also to escape the gases, right? Flowability, right? So easy to flow होना चाहिए, right? Even sand is also should have a flowability, to have a shape of that means पैटर्न, राइट. वो पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए उसको फ्लोएबिलिटी चाहिए.
cohesiveness, right? You already know this is the ability of particle to stick with each other to give strength, right? तो cohesiveness बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, binders ऐड कर देते हैं, right? Adhesiveness, so it should adhesive to the other particles also, right? Otherwise it should not stick to the right, it should stick to the that flask के साथ भी ये होनी चाहिए, मतलब चिपकना चाहिए. Refractoriness is nothing but the at high temperature it can withstand, right? So parting sand, that we have already seen it, right? So pattern allowances, right? So it is shown in the figures also, right? So these 5 allowances we have seen, different types, right? देखो इसमें split pattern, if you see, right, dowels plays important role, right? तो 2 पीस में है, 2 पीस का अलाइनमेंट के लिए आपको डॉवेल पिन चाहिए, right? नहीं तो वो शिफ्ट हो जाएंगे, पर्टिकुलर सर्कुलर शेप नहीं मिलेगा उसका. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. So core point, core box, right? So this is there, right? Right. This is the all molding tools are there, right? So this is important, right? Steps, right? One by one we will see. This is their other manufacturing process. Yes, this I already shown you, all right? सर जो ये डायग्राम मुश्किल है ये पेस्ट कर सकते हैं? अरे बनाना पड़ेगा, एग्जाम में भी तो आएगा. अरे सर क्या एग्जाम में भी आएगा, राइट? ये अगर ड्राइंग ड्रा किया तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से फ्लो कैसे होता है, राइट? यहाँ पे देखो स्क्रू से जाएगा, फिर ये है वेल है बेसिकली, वेल से जाएगा, फिर इससे रनर से जाएगा, गेट से जाएगा, फिलअप होगा, 4 है, राइट? फिर राइजर से ऊपर आएगा, राइट? तो आपको आइडिया लग गया है कैसे बनाना है ये, राइट? सो वी विल सी स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सैंपल steps. Step by step process of beam sand molding preparation. The pattern whose casting is made is placed on the wooden board with the flat side on the board. Right? तो इसमें क्या है, 2 हाफ्स रहेंगे जिसमें आपका डॉवेल पिन नहीं है, जिसमें आपका होल है, राइट? जिसमें आपका होल है, राइट, मगर डॉवेल पिन वाला एक्सट्रूडेड पोर्शन नहीं है, तो वो पार्ट पहले आपको रखना है फ्लास्क में, राइट? टेक बोर्ड, पुट द फ्लास्क, put the your dry sand, right? Sorry, parting sand, right? Then you put your half pattern which don't have extruded dowel pins, right? वो रखना है. The drag box is taken and is cleaned from the inside so that the loose and sand remains attached to it. तो वो बॉक्स जो है क्लीन अप करके लेना है. Drag is placed on the board, right? Parting sand is applied slightly over the pattern and the board, right? जो आपने बोला था white sand की कौन सी है, right? तो वो sprinkle करना है. Sand is packed in a corner of the board. Sand is filled over the pattern, right? Using hammer, packing is done first from the pin side, afterwards from the butt side, right? तो वो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द योर पैटर्न, शेप एंड साइज. आपको इवनली उसको रैमिंग करना है, राइट? जो पिन एरिया है, मतलब जो आपका रेसिस है, वहां पे आपको स्पेशली अच्छे से रैम करना है, राइट? क्लीन द स्ट्राइक ऑफ बार एंड देन
by using the strike of bar, remove the excess amount of sand, right? तो strike bar था ऊपर से आपको उससे remove करना है sand. The drag is turned upside down, right? तो drag को उल्टा करना है, उल्टा करके रखना है, जैसे कि पैटर्न का हाफ जो पोर्शन है वो ऊपर आ जाए, right? Using bellow, loose sand is blown off, right? बेलोज जो है, बेलोज यूज कर सकते हैं, या फिर उसने क्या किया था, राइट, ग्राफाइट, उसके व्हाइट सैंड, पहले पार्टिंग सैंड अप्लाई किया, उसके बाद ग्राफाइट वाला जो पोर्शन था वो अप्लाई किया उसने, राइट. द कोप बॉक्स इज टेकन एंड क्ले wash is given inside and as done in case of drag box, right? The same procedure आपको कोप बॉक्स भी आपका क्लीन करना है और उसके ऊपर रखना है, ड्रैग बॉक्स के ऊपर. कोप इज नाउ प्लेस्ड इन अ ड्रैग ऑन अ ड्रैग बॉक्स. द राइजर पिन एंड स्क्रू पिन आर प्लेस्ड ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट, इन द पैटर्न. पार्टिंग सैंड इज अप्लाइड ऑन द पैटर्न, राइट. बाद में उसको पार्टिंग सैंड अप्लाई करना है. देखो पहले क्या किया आपने, ड्रैग का उल्टा किया, राइट, तो हाफ पोर्शन ऊपर आ गया, उसमें फिर आपने हाफ पैटर्न ज्वाइन किया विद डॉयल पिंस, राइट. राइजर रजल ऑपोजिट में रखा. इट डिपेंड्स ऑन अगेन द डिजाइन, राइट. तो ऑपोजिट में रखा, फिर उसको सैंड फिलअप किया है, राइट. Putting the sand, parting sand is applied on the pattern. The vent rod is used for making the escape path for gases that comes out at the time of casting in the cope. After ramming, riser pins and runner pins are removed, right. The hole made by the runner has to widen up to facilitate pouring the metal. वो जो आपका जो रनर का है, राइट, तो होल वो वाइडन आप कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन, आपको पाथ कौन सा कैसा चाहिए, राइट, कहाँ से जाना है, दैट यू कैन डू. ड्रॉ पिन इज इंसर्टेड इन द पैटर्न एंड यूजिंग गेट कटर्स, और गेट इज कट इन द ड्रैग पोर्शन, राइट. तो पाथ लाइन बना सकते हैं आप सारा कुछ. So finally your this is mold will be ready for pouring the molten metal, right. So again there are different types of die casting. So जैसे आप mold बोलते हैं उसको इसमें die बोलते हैं, that is made of metals, right. Centrifugal casting, they are using centrifugal force, right, to fill up the material, right. So that we will see in these things, right. Theoretical part. Investment casting, so wax is used as a pattern material in investment casting. Permanent mold casting, so the molds will not be break in this casting. So main, right, नाम पे आपको जाना है. Permanent mold means it will not be destroyed, right. In sand casting, what you are doing, to sand, you have to break the sand, right. So exercises हैं इसमें. Aims, right, to make the mold of octagon shaped pulley pattern, right. Pulley already we have seen, right, it is an octagon shape. Mold material, tool required, sequence of operations, right. So this is your drawing, right, and you have made the mold, right. Right, working sets. The procedure when is one of the same, right. So only what you have to do, right, in a two-piece pattern there should be proper alignment, right. If you see this one, right, proper alignment should be there, right. In single piece pattern, right, in single piece pattern
drag and pop is there, but right, if it is again there is misalignment, so you that allowance you can take out of your screw and riser, right? सिंगल पीस पैटर्न में आपका शिफ्टिंग का उतना इश्यू नहीं होता है, मगर जो टू पीस पैटर्न्स है, टू पीस पैटर्न्स में अलाइनमेंट का इश्यू होता है। राइट, क्लियर हो गया आपको? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, we have to make the whole PDF now. हाँ all PDF. With the... Okay, sir. Sir, both PDF. Only one PDF is there. Only 22 pages are there, right? Right. So while making drawings, na you can means by freehand you can make it, right? ये जो ड्राइंग्स हैं छोटे छोटे, ये फ्रीहैंड से बना सकते हैं। ओनली द मोल्ड, राइट, मोल्ड ऑफ प्रॉपर से बना लेना, राइट, मोल्ड बॉक्सेस से वो प्रॉपर से बनाना है विथ यूजिंग स्केल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। बाकी आप जो ये है मोल्डिंग टूल्स, यू जस्ट ड्रॉ बाय फ्री हैंड, राइट, फ्री हैंड से आप बना सकते। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टेप्स आप जो इसमें भी देखोगे स्टेप सेम है, राइट, इट इज हैविंग सेम स्टेप्स, राइट। अनदर वन वीडियो, ये सारी ड्राइंग बनानी है, स्किप भी करनी है? नहीं, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, राइट। तो ये जो ये है कैसा, मतलब आज ओवरऑल कैसा लगा ये आपका? साइड बढ़िया वाला, था। मिट्टी वाला सर बढ़िया, है? सर बढ़िया था। देखो, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड है। आपको लगेगा कि ये आपका स्टैंड है, ये इंडस्ट्री कैसी है, बट इफ यू सी, राइट, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जो पार्ट्स होते हैं, राइट, द प्रोटो पार्ट्स दे आर मेड बाय दिस प्रोसेस ओनली, राइट, दे विल नॉट इन्वेस्ट टू मच थिंग्स बिकॉज इट कैन चेंज। सर जब इस टॉपिक पे हमारा प्रैक्टिकल होगा तो सर हम कौन से टूल यूज करेंगे, एडवांस वाले या फिर जो अभी वीडियो में दिखाते वाले? जो वीडियो में दिए हुए हैं ना, वो टूल्स ही वैसे ही आपको लैब में वैसे ही बनाना है, राइट, बाय हैंड। दैट्स व्हाई आई हैव शोन दैट वन, राइट। ओके सर। आपको अगर एडवांस में देखना है तो यू कैन गो थ्रू द किर्लोस्कर, Ferrous Industries Limited is one industry is there, DCM is one industry is there, right? They are using advanced technologies, right? They all means robotics, even robotics they are using for this one, right? So handling because molten metal you have to handle it, right? So they are using robotics also, right? It depends on again volumes, right, whether you are making for the proto part or not, right? So for proto part they are going for the manual things, right? तो उसमें वो क्योंकि चेंजेस आ जाते हैं, फिर चेंजेस के लिए फिर आप लाइन डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जो रेगुलर लाइन है आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, right? तो ये है आपको ये जो पीपीटी है मेरी, पीपीटी और ये पीडीएफ दोनों में क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, क्लासरूम पे, राइट। तो फ्रॉम दैट आल्सो यू कैन स्टडी इट, राइट। तो देखो, इनोवेटिव एक प्रोजेक्ट है ना आपका। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, आवाज आ sir. रही है? इनोवेटिव प्रोजेक्ट का आपका ये सबमिट करना है, राइट। आपको आइडिया सबमिट करना है पहले, राइट। I think 15 January is the date, last day to submit the proposal, right? So you can take any part, just like a casting part, right? Cast part ले लो, उसमें मटेरियल कौन सा ले लो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंस्पेक्शन, राइट। कौन सा भी एक सिंगल पार्ट लेना है, सर हमें जस्ट लाइक पिस्टन ले लो या सर फिर एब्स्ट्रैक्ट देना है क्या? ब्लॉक ले लो, या इवन
इवन नट बोल्ट्स ले लो। सर लिखना क्या है लेकिन इसमें? उसमें खुद का आपका एक आइडिया होना चाहिए एज पर एज गाइडलाइंस। सर एक एब्स्ट्रैक्ट देना है। हाँ, abstract, only idea what you are going to do. ओके सर। एक सिंगल पार्ट देखो, इट इज फ्री, राइट? अगर इसमें अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना है तो यू डू दैट वन रिलेटेड टू योर दिस सब्जेक्ट, राइट? सो समझो आपका एक ट्रैक्टर ले लिया या कार ले लिया, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, राइट? और उसका मटेरियल्स क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, इंस्पेक्शन कैसा होता है, ये पूरा डाटा जो है you have to get from that programming. If you are interested in programming also, right, you can do that. It is free. सर कितने But पेजेस का it's related to your these things, this subject. हेलो सर, कितने पेजेस का वो देना है एब्स्ट्रैक्ट? Abstract तो 1 pages का देना है आपको. 1 page is enough. सर Right? That is just for the proposal thing, right? तो आपको करते समय ये ध्यान रखना है कि ये चेंज ना हो, राइट? चेंज कर सकते हैं बाद में, मगर आपका ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो ये माइंड में रखना है कि आपको चेंज नहीं करना है. सर is it like designing something new, or is it like a research thing on something that already exists? That all are included in that. You can do case study, you can do new things, right? But Okay, your anything as long- own findings will be there. Your own Okay. different findings will be there. Okay, Right? I understand. Thank you. कुछ नया चाहिए, right? और जैसे है वैसे दे दिया तो उसी हिसाब से जैसे मार्क्स लगने चाहिए वैसे मार्क्स लग जाएंगे, right? Yes, sir. ठीक है. This depends on you. It again you are free, right? अगर आपको कंप्यूटर साइंस का कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, टेक दैट सब्जेक्ट, रिलेट टू दिस सब्जेक्ट. राइट? प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्रामिंग करो, मगर रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट. राइट? यू आर फ्री. ठीक है. और कोई डाउट्स है तो पूछो. सर फाउंड्री को हम प्रोग्रामिंग से कैसे रिलेट कर सकते हैं? फाउंड्री का यू टेक ऑल पार्ट्स, राइट? इसमें जैसे आपको एक बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स, राइट? कार्स ले लो, राइट? या फिर ट्रैक्टर्स ले लो, उसमें से कौन से पार्ट्स हैं जो कास्टिंग से बनते हैं, कास्टिंग प्रोसेस, राइट? तो वो इसमें ऐड करना है. फिर यू कैन यूज C++, राइट? तो कौन सा भी, अगर मेरे समझो मुझे आउटपुट क्या चाहिए कि अगर मैंने ट्रैक्टर का क्लिक किया तो उसके पार्ट्स आने चाहिए, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, राइट? तो फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया तो फाउंड्री पे मैं जाऊंगा, तो फाउंड्री पे मुझे पार्ट्स दिखने चाहिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेंटेटिव कॉस्ट, राइट? इफ यू गो इन डिटेल्स यू कैन ऐड द फीचर्स, राइट? इंडिया वाइज तो हमें वो प्रोग्राम डिजाइन भी करना पड़ेगा? सर प्रोग्राम बनाना है नेक्स्ट, मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम. If you are interested in programming, you can use any platform. Let's see, C++, Java, जो भी आपको आता है. सर बट हमें, जैसे आपने हमें एक एग्जांपल दिया कि जैसे ट्रैक्टर पे अगर हमने वो किया तो उसके सारे वो फीचर्स वगैरह शो करे, तो हमें वैसा प्रोग्राम डिजाइन भी करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ओके सर. प्रोग्रामिंग, वो जो प्रोग्रामिंग है वो आपको प्रोजेक्ट में पुटअप करना पड़ेगा. सर ग्राफिक्स वाला प्रोग्राम बनाना तो नहीं पड़ेगा ना नॉर्मल? अगर सिर्फ टेक्स्ट वाला प्रोग्राम हो चलेगा काम? हाँ, टेक्स्ट वाला. और फाइनल आपको जो सॉल्यूशन तो दिखाओगे, मतलब प्रोग्राम चल भी नहीं रहा है, चल भी रहा है, नहीं चल रहा है, क्या आपका आउटपुट दिखाना पड़ेगा. आउटपुट यू हैव टू शो इट. So you take print screen and then you have to put in the word file. ठीक है सर. राइट? तो यू आर फ्री, राइट? अगर आपको मतलब कौन सी भी मटेरियल का कौन सा भी प्रोसेस कुछ भी करना है तो कर सकते हो, बट इट शुड बी क्लियर एंड समवॉट न्यूअर वन, राइट? कुछ खुद का चाहिए उसमें. ठीक है सर.
ठीक है, इट इज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आई थिंक, नहीं तो कोरिलेट करके आप एक ही प्रोजेक्ट करके सारे सब्जेक्ट लिंक कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछो। एनीबॉडी हैव डाउट्स? नो डाउट्स, ठीक है। सर ये तो एब्स्ट्रैक्ट की आपको लास्ट डेट 15 जन है ना बस? हाँ 15 जनवरी, ओके सर। तो वो आपका जो एक ऑर्डर आया मगर वो वेबसाइट पे मुझे नहीं मिल रहा है, आपको कहाँ से मिला था? जो एक ड्यूटी का सर्कुलर आया हुआ है कि आपका क्लासेस यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये आपके एग्जाम्स होंगे, ऐसा कुछ आया है ना आपसे फर्स्ट ईयर का? हाँ सौरभ, सौरभ है? सौरभ है क्या इसमें? हाँ सौरभ है, सौरभ। यस सर। हाँ कुछ आया है इसका इसमें कैलेंडर का, इसका आपका फर्स्ट ईयर का? सर अभी तो एक वो आया था सर, तो टेस्ट वगैरह के शेड्यूल्स आए थे, मतलब कितने हाँ कितने शेड्यूल होंगे। शेड्यूल्स आया हुआ है, रुक वो जाते मुझे खत्म ही होने वो वाला कहाँ था। से आया था? वो कहाँ से आया था? सर वेबसाइट से। वेबसाइट से? सर वो वेबसाइट पे? हमारा नहीं है सर, वो 2020 का है। हाँ वो 2020 का है, वही बोल रहा हूँ मैं आपको ना। ड्यूटी के वेबसाइट पे मुझे नहीं मिला, मगर A17 कुछ ग्रुप्स ने मुझे भेजा ग्रुप पे, तो वो कहाँ से आया मुझे थोड़ा सा पता करके बता सकते हो, क्योंकि ड्यूटी के वेबसाइट पे नहीं है। सर डीटीयू के वेब पे बहुत पहले आया था सर हमारा वाला शेड्यूल। उसके अच्छा, बाद सर अभी नया आया है इवन सेमेस्टर वालों के लिए, हमारा वाला सर बहुत पहले आया था। हाँ क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा डाउट्स हो गया कि आपको लिए भी वही फॉलो होगा या ये फॉलो होगा, राइट? मुझे भी ऊपर से कुछ कंफर्मेशन नहीं है, राइट? सो आई विल सी देन, राइट? ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। अगर किसी का डाउट है तो मुझे पूछो। नो सर। हाँ अभी मुझे क्या करो, अटेंडेंस दे दो। सर सौरभ दे देगा अटेंडेंस। अरे आप हाँ, दे दो, रोल नंबर दे देना, मुझे पिक्स मत भेज देना। एब्सेंटीज जो है यस सर मैं भेज दूंगा सर, अभी स्क्रीनशॉट 50 भेजा। स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं तो 25 एब्सेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स के रोल नंबर मुझे भेज देना, right? एक दो इधर इधर हो गए तो चलेगा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाता है, right? ठीक है। सर अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है फिर कैसे बनाना? अरे प्रोग्राम नहीं नहीं, इसमें फ्री है। अगर कुछ स्टूडेंट्स है इंटरेस्टेड है, कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो यू गो टू मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मटेरियल्स का स्टडी करो। जैसे देखो एक पार्ट लेना है आपको, पिस्टन ले लिया, पिस्टन्स में कार का पिस्टन्स अलग होता है, बाइक्स का पिस्टन्स अलग होता है, मटेरियल्स यू कैन चूज डिफरेंट डिफरेंट, डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट होता है, राइट? तो आपको मटेरियल की स्टडी करो, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी करो, उसके बाद इंस्पेक्शन की स्टडी करो, कैसे इंस्पेक्ट करते हैं उसको, राइट? क्लियर? सर ये ओनली केस में वो छोटा पार्ट्स ले लो, राइट? ओनली इफ यू टेक वॉशर, वॉशर का कौन सा मटेरियल होता है, किस टाइप्स के वॉशर्स होते हैं, राइट? वॉशर का फंक्शन क्या है, राइट? मटेरियल्स हो गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, राइट? उसका इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजर करने के लिए, दैट्स इट। सर यही सब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करो, यू आर फ्री, राइट? कौन सा भी आइडिया अप्लाई करो और यू कैन डू दैट। सर एग्जांपल जैसे हमने वॉशर लिया तो हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें वॉशर की डिटेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कास्टिंग क्या है, मटेरियल क्या है। हाँ
बट वो प्रोग्राम रन होना चाहिए और वो आउटपुट दिखना चाहिए। यस सर, आउटपुट तो दिखेगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन गो। टेक्स्ट में आउटपुट आएगा सिर्फ। है टेक्स्ट का आउटपुट आएगा, ग्राफिक्स अभी ऐड करने नहीं सीखे। जो नहीं जो भी है आप करो उसमें। देखो उसका एक रिव्यू है, बीच में एक रिव्यू होगा उसका इनोवेटिव प्रोजेक्ट का। पहले क्या है, प्रपोजल सबमिट करना है, उसके बाद एक रिव्यू होगा, उसके बाद फाइनल सबमिशन होगा। राइट, वो आप करना चालू करो, हो जाएगा। राइट, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आपका क्लास स्टॉप कर देता हूँ। राइट, सौरभ अटेंडेंस देके लेके मुझे दे दो है एब्सेंटीज। किसी को कुछ डाउट है? सर ये जो फाइल वाला काम है उसमें डायग्राम लेफ्ट साइड पे ब्लैंक साइड पे बनाने हैं ना? हाँ, ब्लैंक स्लेट पे बना। ठीक है सर। सर जो हमें पेंसिल ये से बनाने प्रोजेक्ट हैं, देना है, ये हमें वर्ड फाइल में देना है या फिर हैंड रिटन? देखो पेंसिल से बनाओगे तो इजी जाएगा आपको। राइट, पेन से बनाओगे फिर खराब हो जाएगा। राइट, यू प्रेफर टू ड्रॉ बाय पेंसिल। सर ये जैसे लिखा है वैसे एग्जैक्टली लिखना है ना? हाँ, एज इट इज। सर एब्स्ट्रैक्ट हैंड रिटन होना चाहिए या फिर टाइप्ड होना चाहिए? कौन सा आप जो फाइल की बात कर रहे हो? नहीं सर, मैं बात कर रही हूँ वो जो इनोवेटिव आइडिया का, मतलब वो जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइप। टाइप। ओके सर। राइट, तो उसमें जो रेफरेंसेस हैं मैं इसका एक ये भी दूंगा आपको। अब पहले आप सबमिट करो, उसके बाद एक टेम्पलेट दूंगा, उसमें मतलब इंडेक्स वगैरह जैसे यूज करने हैं। तो इसमें एक कंसर्न है कि आपको जो रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस जो भी आप कहाँ से भी आइडिया लाए, कहाँ से कुछ किए, राइट, तो वो रेफरेंसेस देना जरूरी है। और रेफरेंसेस के लिए आपको जर्नल पेपर्स यूज करने हैं, रिसर्च पेपर। First preference. Second preference is books, right? And third preference is your websites. तो मोस्टली आप वेबसाइट्स यूज करोगे तो that will carry less marks. You go through books, you refer some books, then सर you बट refer अभी some हम research papers. Right? सर बट अभी हम कॉलेज में है नहीं, तो कोई एक्सेस ही नहीं है हमारे पास रिसर्च नहीं, पेपर्स या नेट पे मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे रिसर्च पेपर्स भी ना आप। सर फिर वो अगेन वो तो वेबसाइट का ही सोर्स हो गया सर, हम उसे वो तो नहीं बोल सकते। नहीं, रिसर्च पेपर में इट इज डिफरेंट। मैं आपको एक 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 स्टैंडर्ड कॉपी देता हूँ आपको, राइट, उसके बाद आपको पता चलेगा। सर आप स्टैंडर्ड कॉपी सीआर को दे दो, वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं क्लास क्लोज कर देता हूँ। नो सर। ओके, ठीक है। नाउ Thank आई you, एम लीविंग, sir. वी कैन लीव।